Hello aspirants, welcome to Vijayanagar. In this video, we are going to discuss how our Prelims SureShot Series helped our students to secure around 40 to 45 marks in the recent OPSC Prelims 2024 exam from our 7 selected tests only. ଆମର Prelims ର SureShot Series ଆମେ just 20 days before exam start କରିଥିଲୁ। ଏହି ସିରିଜଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ଇନାଗୁରାଲ ଅଫର ହିସାବରେ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓପିଏସସି ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ଓପିଏସସି ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାକୁ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଇଭେନ୍ ବିଫୋର ଦ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛୁ କି वी कैन एक्सपेक्ट 20 to 30 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सीरीज। ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। एंड ଏଇଟା 3000 4000 क्वेश्चन ରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ओनली 7 टेस्ट ଦେଇଛୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ କି 1000 क्वेश्चन ଗୋଟେ କମ୍ପାଇଲେସନ ଦବୁ ବୋଲି, ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଟାଇମ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ତାକୁ 7ଟା ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 700 टेस्ट क्वेश्चंस ओनली। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲୁ ଯେ क्वेश्चन ସହ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ପ୍ଲିଜ ପଢନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ क्वेश्चन ଆସିବ। ଏଠି अगेन कही रखिबी आमे एक्सप्लेनेशन भी पेजेस और पैराग्राफ रे दोनु, बहुत ही क्रिस्प 1 2 लाइन 3 लाइन भीतर ही हमरो सब स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करी कि एक्सप्लेनेशन दिया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। गोटे क्वेश्चन आस्तला स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इट पैरासाइटिक फूड चेन ऑलवेज ऑपरेट देची पिरामिड ऑफ बायोमास इन मराइन इकोसिस्टम इन्वर्टेड बोली लिखिची, और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी आर नेवर इन्वर्टेड लिखिची। एग्जैक्टली ए क्वेश्चन आम टेस्ट रे भी आस्तला कि consider the following statements regarding ecological pyramid. Pyramid of energy as JC always upright. Second is pyramid of biomass inverted in aquatic ecosystem. तापरे pyramid of number can be inverted in parasitic food chain. Pyramid of energy can be inverted in highly productive aquatic systems. Before आमे explanation देखिबा मु कहि रखुची कि ए क्वेश्चन टा किछि जण contested बोली कहउचंती, because एठी always गोटे टर्म मेंशन अछि, always नुह। आ सेटा भी आमे देखिबा explanation रे कि pyramid of energy is always upright गला। pyramid of biomass can be inverted in aquatic ecosystem where phytoplankton have lower standing biomass than zooplankton. एठी लिखा है कि phytoplanktons biomass is lower than zooplankton at any given time, but their high productivity sustains the higher trophic levels, leading to an inverted biomass pyramid. एठी parasitic food chain रे pyramid of numbers inverted हबो बोली लिखा है। आम क्वेश्चन रे कोन थिला कि अपराइट थिला, ए स्टेटमेंट टा भूल हे गला। क्लियरली मेंशन करा है जे पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व हे गला ना एटा। नेक्स्ट देखिबा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऊपर क्वेश्चन पचारची। सहज रे कहयाको गले एटा पंचामृत अनाउंसमेंट जो हेची कॉप 26 रे ता ऊपर ए क्वेश्चन अछि, काहे कि ना एनडीसी इज लिंक्ड टू पंचामृत अनाउंसमेंट मेड एट कॉप 26। ओके, एठी मेंशन करा हेची एमिशन इंटेंसिटी को 45% कमेवा पई बाय 2030 का कंपैरिजन रे 2005 रो लेवल रु। सेकंड स्टेटमेंट कोन अछि, इंडिया एम्स टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस बाय 2030। आम क्वेश्चन देखिबा आमे डायरेक्टली पचारछु कि पंचामृत स्ट्रेटजी रो कंपोनेंट्स माने को कोटा। एठी लिखा हेची 500 gigawatt of non-fossil energy capacity, 50% of energy requirement from renewable energy, आउ achieving net zero emissions. Okay, explanation रे आमे कौन कलु सिंपली लिखि देलु कि पंचामृत स्ट्रेटजी टा आम पीएम को द्वारा 26 सीओपी रे अनाउंस करा जायछि। एई पंचामृत स्ट्रेटजी अंडर रे कोन 5 नेक्टर एलिमेंट अछि, जोटा कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर, रिडक्शन इन कार्बन एमिशन, कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन और नेट जीरो टारगेट। ओके, एटी क्लियरली लिखा है आम जो स्टेटमेंट कथा होतले कि इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन। ए थर्ड स्टेटमेंट देखिबा, इंडिया विल रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल। ओके, सॉल्व हे गला। नेक्स्ट देखिबा, हु वाज द फाउंडर ऑफ लिंगायत सेक्ट। आम क्वेश्चन रे आपण देखि परिबे भक्ति सेंट मान को ऊपर क्वेश्चन थिला। सेकंड स्टेटमेंट, बासव रिफॉर्मर इन कर्नाटका प्रीच डिवोशन टू शिवा एंड सोशल इक्वालिटी फाउंडिंग द लिंगायत सेक्ट। एक्सप्लेनेशन रे भी लिखा है कि एटा ट्रू, बासव 12th सेंचुरी रे प्रीच लिंगायतिज्म रिजेक्टिंग कास्ट। ओके, तापर देखिया द चोला नेवी वाज नोन फॉर इट्स एक्सपेडिशन अगेंस्ट कोकोटा।
किछि जण कहउथिले मालदीव्स भी हबो, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका भी हबो, काहेकि ना साउथ ईस्ट एशिया रे एक्सपेडिशन अछि। ओपीएससी यार आंसर इंडोनेशिया एंड श्रीलंका देइछि। आमर भी क्वेश्चन थिला चोला एम्पायर ऊपर फॉलोइंग क्वेश्चन। एठी फोर्थ स्टेटमेंट देखिबा, राजेंद्र वन लेड नावल एक्सपेडिशन अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एंड स्टॉक एट श्रीविजय सुमात्रा। ओके, एक्सप्लेनेशन रे देखिबा कि राजेंद्र वन his famous campaign against Srivijaya. Okay, he captured Kadaram or Kedah and claimed victories in Southeast Asia, जोटा कि इंडोनेशिया और मालयेशिया पेनिनसुला रीजन। काहे कि ए जो श्रीविजय एम्पायर टा एटा बेस्ड ऑन कोठी सुमात्रा। क्वेश्चन इटसेल्फ मेंशन अछि सुमात्रा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द रिट ऑफ मैंडामस। ओके, यार आंसर कौन? तो कंपेल ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी। आमर डायरेक्ट अछि ए क्वेश्चन टा। एठी ऑप्शन सी अछि मैंडामस। तार एक्सप्लेनेशन रे लिखा है this writ is issued when the court finds that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is infringing on the right of an individual. Next देखिवा, who commissioned the construction of rock cut Jain monastery is in Udagiri hills. Okay, आमर भी सेम उदयगिरी खंडगिरी केव ऊपर क्वेश्चन आस्तला। they are primarily associated with Jainism. आउ उदयगिरी खंडगिरी caves were excavated during the reign of, तो एठी हमरो जो खारवेल आंसर टा हबो क्लियरली लिखा है एक्सकैवेटेड ड्यूरिंग खारवेलस रेन। नेक्स्ट गोटे ऑब्वियस क्वेश्चन आछि, द डायरकियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट गोटे ऑब्वियस क्वेश्चन आछि, द डायरकियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हमर क्वेश्चन आस्तला मिसमैच करे कि प्रोविंशियल डायरकीटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आस्तला, ताको एक्सप्लेनेशन रे क्लियरली लिखा है वाज ए फीचर ऑफ 1919 एक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिवा, which one of the following article of Indian Constitution provides that law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? Article 141। आमे एटा को दीटा वे रे कवर करछु। फर्स्ट ए क्वेश्चन रे सुप्रीम कोर्ट रो जो डायरेक्शंस कंप्लीट जस्टिस टा सेटा आमे सेथिरे कवर करछु आर्टिकल 141, जोटे क्लियरली लिखा है जे डिक्लेयर लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स नॉट अबाउट रेमेडीज। ओके, आ गोटे क्वेश्चन आमे कवर करछु कंफ्यूज करिया पे कि हाई कोर्ट सुपरविजन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग हला। हाई कोर्ट रो जो सुपरविजन ऊपर तो लिखा है हाई कोर्ट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 141। ओके, या को क्लैरिफाई करा है कि स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट, काहे कि ना आर्टिकल 141 मेक्स ओनली सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटेल इन्फ्लेशन ऊपर देछि कि सीपीआई टा प्राइमरी मेट्रिक यूज्ड बाय आरबीआई। आउ कोन अछि कोर इन्फ्लेशन इनक्लूड्स volatile components like food and fuel prices. ओके, तापर हेडलाइन इन्फ्लेशन देछि कि refers to total inflation in an economy, supply side factors such as monsoon affecting agricultural output and global crude oil prices etc. एठी हमरो डायरेक्ट स्टेटमेंट अछि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई combined is the RBI's official inflation target under its monetary policy framework. ता सह म आपनो डायरेक्ट देखुछि केमति एलिमिनेट हबो। कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी फ्रॉम द हेडलाइन सीपीआई। एक्सप्लेनेशन कौन अछि? कोर सीपीआई एक्सक्लूड्स फूड एंड fuel and is used to gauge underlying trends. Okay, it helps assess underlying price pressure by filtering out volatile components. एठी सेकंड स्टेटमेंट रे अछि जोडे करेक्ट अछि। आ एठी कोन हे जिवो? एटा ताहले भूल हे जिवो। एठी इंक्लूड्स अछि, हमें क्लियरली लिखा है कि कोन पई याको एक्सक्लूड करा जाय। आउ जेबे तुमे सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दोछ बाय डिफॉल्ट तुमरा आंसर हे जाउची बी। नेक्स्ट देखिबा, हु फॉर द बैटल ऑफ तालिकोटा। हमरा विजयनगर एम्पायर ऊपर क्वेश्चन थिला, जोथिरे थर्ड स्टेटमेंट होची द बैटल ऑफ तालिकोटा रिजल्टेड इन ए डिसिसिव डिफीट फॉर विजयनगर एंड द सैकिंग ऑफ द कैपिटल। यार क्लियर एक्सप्लेनेशन लिखा है कि the combined forces of Deccan Sultanate defeated Vijayanagar army led by Ramaraya at the battle of Talikota. Okay, next देखिवा। ओके, ए क्वेश्चन टा मु कहबी कि हमरो डायरेक्ट पिला सॉल्व करि परिबेनी, 50-50 एलिमिनेट करि कि हेल्प करि परिबे। तो आमे यारो क्लेम तो करिवुनी कि ए क्वेश्चन हमरो ही आसी जाइछि आ पिला कर दैछन्ती बोली। बस मु कहि रखुछि कि हमरो क्वेश्चन थिला कोन मुगल इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा ऊपर, जोठी क्लियरली लिखा है ओडिशा वाज ब्रॉट fully under Mughal control after Raja Man Singh's campaign and by 1593 it was administered as part of the Bengal Suba.
एक्सप्लेनेशन रे भी ए जिनसर क्लियर लिखा है कि इंटीग्रेटेड इनटू बेंगल सुबा ऑफ मुगल एम्पायर। तो एठी कोन हे जिवो, एठी जो माने अकबर मारिया को चाहिए थाते एटा तो भूल हे गला, हम ऑलरेडी जानिले। एट द सेम टाइम एठी भी राजा मानसिंह को एठी मैच कर देला परे 4 दीटा ऑप्शन अछि, आमे 50-50 सिलेक्ट करि परबा जदी ए तीनटा रु कोटा भी हमको आछी। ओके, जेहेतु जहांगीर 1607 रो हमरो मेंशन नाही, आमे ए क्वेश्चन को क्लेम करियनि। नेक्स्ट देखिबा, एही क्वेश्चन रे मैच द फॉलोइंग रे जदी देखि परथिबे से क्लियरली पचारची तमे जदी बक्सी जगबंधु जानिछ कि से लीडर ऑफ खुर्दा रिबेलियन बोली, जोटा कि मैक्सिमम लोक जानिछंती, ताहले ए क्वेश्चन भूल हबार प्रश्न उठुनी, काहे कि B1 गोटे ही आंसर अछि। तो हमरो पाइका रिबेलियन रे क्वेश्चन आसी, क्लियरली लिखा है रिवोल्ट वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु, मिलिटरी चीफ ऑफ द खुर्दा राजा। ओके, नेक्स्ट, द एल निनो phenomenon is associated with weakening of monsoon in India। हम क्वेश्चन देखिबा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल निनो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, द occurrence of El Nino is associated with reduced rainfall during the Indian monsoon session। क्लियरली लिखी कि reduced rainfalls during the Indian monsoon session। एक्सप्लेनेशन रे भी से जिंस लिखा है can lead to below average rainfall, drought condition and crop failures in India। हे गला। नेक्स्ट, UPSC is mentioned in which part of Indian constitution। ओके, हमर क्वेश्चन थिला स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रे, जोडी लिखा है एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 315 323 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आउ आमे गोटे लाइन रे लिखिछु कि पब्लिक सर्विस कमिशन जहा पार्ट XIV रे जाउची 315 टू 323। नेक्स्ट देखिबा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यार स्टेटमेंट गुडा देइची, ए स्टेटमेंट गुडा जो देइची एगुडा हमरो कवर हे जाइची ए क्वेश्चन रे। ओके, ए क्वेश्चन रे कवर हे जाइची, एक्सप्लेनेशन दिया है, किंतु हमरो गोटे छोटो वीडियो मु अपलोड करथिली जस्ट एग्जाम रो 2 दिन आगु सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मन रखिया पई। गोटे स्टोरी टेलिंग वे रे नरेट करा जाइथिला, जो थरे SDG 12 को मन रखा जाइथिला कि रेस्पोंसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जे भी देखिथिबो केही भी भूलिबेनी। आ सिंपली ए फोर्थ स्टेटमेंट जोटा कि SDG 14 को होची ताको एलिमिनेट कर देला परे हमर आंसर ए आसी जाउची। Attorney General of India over question पचारची, he appointed by President, he has the right to participate in proceeding of Parliament, he must have qualification equivalent to the Supreme Court judge, his remuneration is fixed by the Parliament through a law under Article 148 of Constitution। Okay, हमर क्वेश्चन कोन अछि, सेम Attorney General ऊपर आछि, appointed by President and qualified to be a judge of the Supreme Court। तापरे has the right to speak and take part in the proceeding of either house of Parliament but has no right to vote। आउ कोन अछि, holds office during the pleasure of president and remuneration is determined by the president। ओके, एक्सप्लेनेशन रे सेतिक ही डिटेल खाली एक्सप्लेन लिखा है कि हां करेक्ट कि इनकरेक्ट आर्टिकल 76 रे लिखा है। बस को जिंस भी अधिका आमे एक्सप्लेनेशन देई कि पिल्ला को कंफ्यूज करिया पई ट्राई करूनु। क्लियरली लिखा है remuneration is determined by the president, एडी लिखा है कोन remuneration fixed by parliament लिखा है। ए स्टेटमेंट भूल हे गला, ए तीनटा याक करेक्ट। नेक्स्ट देखिबा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिलिमिटेशन एंड इट्स इम्प्लिकेशन इन इंडिया। मु कहि रखुची एठी रिसेंटली गोटे जो सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट आस्तला सेटा स्पेसिफिक जुडिशियल रिव्यू को नेके आस्तला कि गोटे नेरो इंटरप्रिटेशन थिला, जदि फंडामेंटल राइट भलिया किछि जिंस ब्रीच होउची जुडिशियल रिव्यू रो कथा आसुची, ता हेले डिलिमिटेशन कमिशन टा कंप्लीटली रिव्यू रो बाहरे रहिबो नाही। एक्चुअली जजमेंट थिला, but still a broader view एया कि its order have the force of law and cannot be challenged in any court। OPSC भी याकू broader view रे नै कि आंसर देइची, जो माने याकू माइन्यूटली पढी चंती आ रिसेंट जजमेंट ऊपर तांकर नॉलेज अछि आ सेही हिसाब रे माने याकू भूल मारी के आसी चंती, दे शुड चैलेंज। आपण माने रिप्रेजेंटेशन दियंतु OPSC को आ क्वेश्चन को चैलेंज करंतु, हेई पारे कि से मल्टीपल आंसर देई पारे और इनवैलिडेटेड हे जाई पारे। देखिबा हम क्वेश्चन रे भी सेम लिखा है रेफरेंस टू डिलिमिटेशन हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ओके, कमिशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमें क्लियरली एटा लिखिछु, एक्सप्लेनेशन रे भी सेम जिंस लिखा है हाई पावर बॉडी जे कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होंती। तार डिलिमिटेशन कमिशन जो सेटअप हेची 4 टाइम्स, एटा हम मेंशन करछु कि 2002 रे भी हेतिला 2001 रो सेंसस अनुसार। I hope this question is doable। Next देखिबा, consider the following statements
with regard to the Comptroller Auditor General. Okay, Office of CAG has been modeled on the basis of Advocate General under the Government of India Act 1919. ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯଦି ଜଣେ ଖାଲି ତାର କମନ ସେନ୍ସ ୟୁଜ କରିବ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ର ବେସିସ ରେ କଣ ପାଇଁ ହବ, ଏଇ ଯଦି ଅପସନ କୁ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ କରିଦଉଛେ, ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଏଲିମିନେଟ କରିଦଉଛେ, ତ ବାଇ डिफॉल्ट सी ଅପସନ ଆମର ଆସି ଯାଉଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, CAG can be removed by president on the ground of proven misbehavior। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ OPSC ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା B and D କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛାଡିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ଜାଣିକି ଠିକ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ଅପସନ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ obviously ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ CAG prescribed format in which accounts of union and states are maintained। CAG is also vested with responsibility of compiling and maintaining account of union government। ଆଉ CAG conducts only compliance audits and not performance audit। explanation ରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି, established under article 148, responsible for auditing all receipts and expenditure of union and state government। ଏଇଟା ଆମ क्वेश्चन हेल्प କରିଛି, ବଟ୍ ଏଇଠୁ କନକ୍ଲୁଜन ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏନଫ ନୁହଁ, ଆଉ itself ଏ क्वेश्चन इज इन conflict। नेक्स्ट ଦେଖିବା, which of the following pairs is correctly matched regarding schedules of Indian Constitution। 6th schedule ଦେଇଛି, 7th schedule, 8th schedule, 9th schedule ଦେଇଛି। ଆମର क्वेश्चन ରେ 1935 act ର influence ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଛି, ଯୋଉଠି କି federal features like the 3 legislative list and provincial autonomy influenced part XI and the 7th schedule। explanation ରେ ବି clearly ଲେଖା ହେଇଛି କି division of powers into union, provincial and concurrent list under 1935 act directly influence the 7th schedule। ओके, 7th schedule ହେଇଗला, ଆମେ आंसर जानिगले। क्रॉस चेक भी जदि करिया ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା, 6th schedule ର ଆମର ऑलरेडी क्वेश्चन अछि, जोठी लेखा ହେଇଛି ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड एडी देखंतु 6th schedule of Indian Constitution consider the following statement। ओके, एठी सी ऑप्शन टा करेक्ट, ओनली 3 कोडा। 6th schedule of Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram through autonomous districts and regional council। ओके, तो ए दिटा एनफ हमरो ऑप्शन बी को मारियारे। नेक्स्ट देखिवा, consider the following statements। the interstate council was set up under article 263। okay, Ponchi commission recommended the establishment, union home minister is the chairman, ଆଉ discuss matters of interest and suggest policies for better coordination। ओके, 4 नंबर टा तो देइछि, किछि सेटे भूल हबार नै, बाकी तीनटा स्टेटमेंट देखिवा। हमर भी इंटरस्टेट काउंसिल रे क्वेश्चन थिला। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ बोथ द इंटरस्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल लिखा हैछि, आ रिकमेंडेशन टा को बाइंडिंग लिखा हैछि। यार एक्सप्लेनेशन हमें देखिवा कि प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। ओके, हाउएवर जोनल काउंसिल रो यूनियन मिनिस्टर। तो एठी जो देइछि यूनियन मिनिस्टर जोनल काउंसिल रो, ये इंटरस्टेट काउंसिल रो नुहंती। तो थर्ड स्टेटमेंट हमर भूल हेगला, जदि थर्ड स्टेटमेंट भूल हेगला, बी सी डी भूल हेगला, हमर ए टा ही आंसर हबो। जी होछि, एक्सप्लेनेशन रे क्लियरली लिखा हैछि कि एक्सप्लिसिटली मेंशन इन आर्टिकल 263 इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 रे मेंशन हेकी अछि, जोटा हमर फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट कर देला। ओके, हमर बेस्ट करबा सत्वे आमे एतिकी क्वेश्चन आनि पारिछु, काहे के नाम पाखरे टाइम बहुत कम थिला, बट विथ आवर एक्सपर्टाइज एंड डेडिकेशन टू क्वालिटी एजुकेशन, आमे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जेबे भी आसीबो, वी विल गिव आवर बेस्ट एंड परफॉर्म बेस्ट इन एग्जाम। यही टेस्ट सीरीज टा पिला को इमेंसली हेल्पफुल हेची, बहुत पिला हमको मेसेज करी जणे चंती, आ आम ऊपर एतिकी भरोसा रखिथिबारु आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ विद्यांश IAS। थैंक यू गाइस, जय जगन्नाथ।